Now we are starting with another question, that is 2021 May. Marks up to 45, this part is given. Please write down the above part here, that is your x, that is your y, right? So I'm now taking y0, y1, y2, y3, y4. Then I'm making, because I'm doing this question by Newton method, so I have to make delta 1, delta 2, delta 3 and delta 4. I hope you can understand why I made 4 columns, because this one is 4, so we have to make 4 columns. So now in the first part we have to do this and this. So what would be my answer? That is 37 delta 1 naught, and by using this what I'm getting, that is 21, that is delta 1 to 1, and the next one is difference between these, that is 6, and the difference is 3. So that is 1 2 delta 1 3. Now I'm subtracting this and this, so what I'm getting, that would be minus 16, right? That is delta 0 to 2. The next one is 6 minus 21, so that would be 15, right? Minus 15, I think, 2 1. And when we subtract this, 3 minus 6, that is minus 3. Okay, that is your 2 to 2. Now I'm calculating the next one, that is 15 minus, so you can write down like minus 15 minus 16, so that is minus 15 plus 16, that is 1. Okay, so 1 delta 3 0, and by subtracting these two, minus 3 minus 15, that is minus 3 plus 15, that is 12. Okay, so this part is 12 positive delta 1 3, and the last one, 12 minus 1, that is 11 delta 0 4. So this is my rough part. Then now I am calculating the value of x. X equals to 48 minus 45 upon 5 equals to 0.6. So how we will do that? The following is my formula. Yx equals to, I'm not writing formula again, I'm just putting the values right now. Okay, so just check out. For 47 plus 37 into, that is my delta 0 0 1. Let's look at this, delta 0 1. Okay, 37 into, what is my x? That is 0.6 upon 1, that is same. Then next 0.6 into 0.6 minus 1 upon 2 into delta 2. Delta 2 is my minus 16, right? So minus 16 plus 0.6 into 0.6 minus 1 into 0.6 minus 2 whole divided by 3 into 2 into 1 into delta 0 to 3. 0 to 3 is my 1. So I have to multiply it by 1 plus 0.6 into 0.6 minus 1 into 0.6 minus 2 into 0.6 minus 3 whole divided by 4 into 3 into 2 into 1. And what would be my 0 to 4 delta? 0 to 4 is 11. So this is my value. Now I'm going to solve this. So now I'm getting 447 plus 22.2 plus 1.92 plus 0.056 minus 0.3696. बेटा प्लीज़ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना कैल्सी पे अपने, बिकॉज कई बार कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है, कैल्सी कई बार गलत बताता है. सो दैट्स वाई एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. ये बोले 470.8, राइट, दिस इज माई वैल्यू. And we can take it as approx, right, 471, or you can take it as 471. So हमारा उन्होंने नटशेल पूछा था, तो नटशेल वुड बी माय 484 था ना मेरा, पहले 484 था, तो अभी कितना हो गया 471. So 484 minus 471, that is 13. So this is my answer. Now I have the next question, that is 2020 May, that is May 1B question. Okay, that is of I think 5 marks. So let me start. 40, 41, 42, 43, 44, sorry, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, right? So we just have a single blank. So which formula we have to use? That is 0 to 6. So first I'm writing the formula, y6 minus 6y5 plus 15 y4 minus 20 y5, sorry, y3, I think that's it, yeah. 6 5 4 3, right? So plus 15 y2 minus 6 y1 plus y0 equals to 0. Please check out the formula once. y6 minus 6 y5 plus 15 y4
minus 20y3 plus 15y2 minus 6y1 plus y not equals to 0. So now we just have to put the values here. So I'm writing it here. 0 to 6, I'm putting the values. 128 minus 6 into 64, right? Plus 15 into y4 is 32 minus 20 into y3 plus 15 into 8 plus 4 minus 6 into 8. No, we have done already 8, right? 6 into 4, that is your y1, and plus 2. So this is my exact value. So how we will solve? 0 equals to 128 minus 384, right, plus 480 minus 20y3 plus 120 minus 24 plus 2. So now my calculation would be minus 20y3 equals to minus 332. So y3 equals to 322 divided by 20, that is 16.1. Okay. Now please check out the another part of 2020 May, that is 6th question. This one is this one is for 15 marks. Yeah, this one. So we are going to do this question. I'm writing this in my book. Now this is my formula. So let me start with first giving the point y0, y1, y2, y3, y4, and after that we are taking first delta 1, and then I'm doing this question with Newton, delta 2, delta 3 and delta 4, because we have values up to 4. So I'm taking 4, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Now I'm solving it out. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन माय आंसर इज 38. देन इन दोनों को करेंगे 41, देन 34 एंड 44. ओके, सो दिस इज माय डेल्टा 10, दिस इज माय डेल्टा 11, या दिस इज माय डेल्टा 12, दिस इज माय डेल्टा 13. ओके, सो नेक्स्ट दिस और दिस, अब इन दोनों का करेंगे देन वी विल गेट 3, इनका करेंगे देन वी विल गेट -7, and इसका करेंगे then we will get 10. So this is my delta 20, this is my delta 21, this is my delta 22, and इन दोनों का करेंगे जब then we will get -10, and इनका करेंगे then we will get 17. So this is my delta 03, this is my delta 13, and at the last when we will do this, this is 27, that is my delta 0 to 4. I hope this point is clear to you. Now we have to calculate x, that is x equals to, what is my value? That is 2010, that is given in the question, because I have to find out for 2010, minus what is my x not here, that is the first value 1985, divide by this minus this minus this. So 1990 minus this is 5. So what is my answer? That would be 25, I think. 15 plus 10, that is 25 upon 5, that is 5. So now I'm doing the question by using the formula. So yx equals to 125 plus delta 0 to 1, that is 38 into x, plus x minus 1 upon 2 into delta 2, that is 3, plus 5 minus 1, 5 minus 2 upon 3 factorial, that is 3 into 2 into 1. So what would be my value? That is first, second, third value, that is delta 0 to 3, that is -10. So we will multiply it with -10 plus 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, divide by 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1 into 27, that is my last part. I hope you understood this thing. 5 plus 190 plus 30 minus 100 plus 135, that would be 380. Okay, so now we have the next question, that is 2019 May 11th question, that is also 15 marks. So by using suitable method's name is not mentioned here, find the number of workers earning between 30 and 40. So in this question we are using Lagrange method, because that would be the best one when you have to calculate something between. Okay, so let me write down the question. So let me convert this into less than series. So less than 20,
less than 30, less than 45, less than 55, less than 70. Okay, and then when we have to convert them into less than, we have to add the values 170, 280, 460 and 70, and we have to calculate for less than 40, right? So we can also write down in here less than 40, so that we will get simultaneously answer. So this one is my 460, and when we add 140 in this, that would be 600, right? And this one is blank. So I'm taking the values. This is my x0, x1, x2, x3, x4, x5, y0, y1, y2, y3, y4, y5. You can also write yx because we have to calculate this one, right? So now I'm writing the formula because I have to calculate for 40. So y40 equals to, I hope you remember the formula, how we have to start with, that is y0, y1, then y2, y3, then y4. Understood? After that, what we have to do, we have to mark like this, then we have to put the values here. Okay, that is x minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus x4, x minus x, that is 2 ना, तो ये कर लेते हैं पहले, x minus x0, x minus x2, x minus x3, x minus x4. Okay, the next one, x minus x0, x minus x1, x minus x3, x minus x4, x minus x0, x minus x1, x minus x2 and x minus x4. Okay, so the last one, x minus x0, x minus x1, x minus x2, x minus x3, and lower part, x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 and x0 minus x4. Similarly here, x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 and x1 minus x4. Similarly here, x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3 and x2 minus x4. Okay, the next one, x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2 and x3 minus x1, sorry, x4, right? So this one, x4 minus x0, x4 minus x1, x4 minus x2 and x4 minus x3. Now we just have to put the values here, that's it. So I'm putting my value 73. I hope you understood this part. We just have to take x value, right? y1, y0, y1, y2, y3, and we have to take x value. I hope this point is clear to you. Similarly, I have to do the other one. So I have done this part. We put the value, just check out the values. We put the values, and after that, what we got, that is 223 is the answer. And once we got 223, after that, what we did, we subtracted 30 because this is the answer of up to 40, right? We have calculated less than 40 and we already given with less than 30, that is 170. 170. So we calculated less than 40
and less than 30 is already given, that is 170 to us. So what we did, we subtracted our answer, that is less than 40 minus less than 30, then we will get the between 30 and 40. ये याद रखिएगा बेटा, 30 से 40 के बीच का निकालना ना. So less than 40 हमने कैलकुलेट कर लिया, less than 30 ऑलरेडी गिवन था, that is 170, दोनों को माइनस कर दिया, then we got our answer. Okay, now we are starting with the next question, that is 2018 May 11th question. This one, just check out the question. They asked for between 28 to 34. 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो हमें लेस देन में करना पड़ेगा, बिकॉज उनके बीच का पूछा उसने. ठीक है, तो लेस देन में करेंगे, तो लेस देन में 19, 28, 38, 49 ऐसे लेस देन होगा. लेट वी स्टार्ट. लेट मी नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. So let we start. First I'm converting this one into less than series. Less than 19, that is our 20. Which question is this? 2018, right? 2018 May. Yeah, this is again of I think 15 marks question. Yes, this is again of 15 marks question. Less than 19, less than 28, less than 38, less than 49, and हमें कैलकुलेट किसका करना है? 35 का. लेस देन 35. बेटा 34 नहीं लेंगे, उसने बोला 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हमें लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारी सीरीज़ को, क्योंकि मोर देन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे. सो लेस देन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेस देन 35 लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 35 ही 34 होता है, राइट. एंड द सेकेंड पार्ट इज गिवन टू अस, दैट इज वाई. दिस इज अवर एक्स, वाई इज 50. So I'm converting that, right? So I'm adding 110, 310, 625, and this one is blank. So I'm labeling x0, x1, x2, x3, x4, right? This is 49. y0, y1, y2, y3, y4. So now I'm starting with Lagrange formula, because I have to calculate this value, so we can simply write on yx here, right? When we have to calculate the value, we can write on yx. Okay, so I hope you understood. yx 3 तक निकालना है मैंने, तो 0, 1, 2, 3. I'm not writing the formula, I'm directly solving the question. Okay, so that is 50, 35 minus 28, 35 minus 38, 35 minus 49, divide by 19 minus 28, 19 minus 38, 19 minus 49, plus the next part is 110. If you are not getting, then please write down the formula first, so that you would be comfortable with that. 35 minus 19, 35 minus 38, 35 minus 49, whole divide by 28 minus 19, 28 minus 38, 28 minus 49. Formula is quite easy, but you have to remember the facts, that how you have to apply, right? 310, 35 minus 19, 35 minus 28, 35 minus 49, whole divide by 38 minus 19, 38 minus 28, 38 minus 49, right? Plus, and the last part, that is 625, 35 minus 19, 35 minus 28, 35 minus 38, whole divide by 49 minus 19, 49 minus 28, 49 minus 38. So this is my part, so I'm solving it out. So my value would be 50 into 7 into minus 3 into minus 14, whole divide by minus 9 into minus 19 into minus 30. So minus कैंसिल हो जाएगा इस पोर्शन में, राइट? जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कट कर देंगे. 10 into 16 into minus 3 into minus 14, whole divide by 9 into minus 10 into minus 21, plus 310 into 16 into 7 into minus 14, whole divide by 19 into 10 into minus 11, okay, plus 625 into 16 into 7 into minus 3, whole divide by 30 into 21 into 11, right? So now minus जो आपके कैंसिल हो रहे हैं आप कैंसिल कर देंगे. Then the remaining part is 2.865 plus 39.11 plus 232.574
प्लस 30, सॉरी माइनस आएगा ना, लास्ट वाले में माइनस बचा है, माइनस 30.303. सो माई आंसर वुड बी अप्रॉक्सीमेट 238.515, और वी कैन ऑल्सो से 239. ठीक है जी. अब 35 से लेस देन का 239 आया, 28 से 35 के बीच में बताना ना हमने. सो 239 तो आपका 35 से लेस देन आया, माइनस 28 से लेस देन कितना है, पहले से 28 से लेस देन कितना आ रहा है, 110, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था. 28 से लेस देन 110 आ रहा है, तो इसमें से 110 माइनस कर देंगे, and we got our answer, that is 129. I hope you understood this question. बेटा 2 attempts में continuously आया सेम मेथड, 18 19 में दोनों में, और 15 मार्क्स का आया डायरेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट. ओके ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 में. बेटा 2018 में बेबीज वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आप वैसे तो न्यूटन भी लगा सकते हैं, चॉइसेस जो है बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी लगा लो. अभी मैं बाइनोमियल से कर देती हूँ उसको, राइट. न्यूटन कर लो, बाइनोमियल कर लो, एक ही आंसर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मैं डेटा लिख लेती हूँ पहले. एक्स वाई दो वैल्यूज़ हैं हमारी, 0 1 1 हमें लेना पड़ेगा ना बीच में, क्योंकि 1 मंथ का उन्होंने पूछा, फर्स्ट 6 मंथ बोले हैं, फर्स्ट और 4th मंथ का पूछा है, तो मैं पूरी काउंटिंग लिखूंगी. 1 2 3 4 5 6. इसमें से मिसिंग कौन कौन सा है हमारा, फर्स्ट मंथ का उन्होंने पूछा है, 4th मंथ का पूछा है, तो वो मिसिंग है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है. 5 7 8 10 12. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. अभी नेमिंग कर देते हैं, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, and last one y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6. okay, so let me start with the concept. बिकॉज 6 वैल्यूज आ रही हैं और 2 ब्लैंक हैं, तो 5 तक जाएंगे हम. सो डेल्टा 0 to 5, दैट इज y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 प्लस सॉरी माइनस y0, राइट, प्लस के बाद माइनस आएगा, इक्वल्स टू 0. ओके. सिमिलरली जब हमें 1 से 5 करना होगा, रिप्लेसमेंट कर लेंगे, y6 माइनस 5y5 प्लस 10y4 माइनस 10y3 प्लस 5y2 minus y1 equals to 0. Now we just have to put the values here. So let me start by putting the values. So that is, in the first part I am putting the values 0 to 5. Okay. So this one is my 5 10. The value is y5 is 10. Na? So 10 minus 5y5 plus 10 into 8 minus 10 into 7 plus 5y1 minus 5 equals to 0. Coming to the next part, 10 minus 5y plus 80 minus 70 plus 5y1 minus 5 equals to 0. 15 minus 5y1, sorry, 5y4. This is my, just give me one sec. This is my y4, right now? So I wrongly wrote. Yeah, this is my y4. So 5y4 plus 5y1 equals to 0. So my answer is 5y1 minus 5y4 equals to minus 15. So we can take minus 5 as common. So my answer would be negative, right? If you want to make this positive, you can shift the signs as well. But I'm not shifting it, okay? When I need that, I will shift. So that one's minus 3, right? So this would be my equation. y1 minus y4 equals to minus 3. Now I'm putting the value in the second equation. This one, I'm putting value here. So that is delta 1 to 5 equals to 12 minus 5 into 10 plus 10y4 minus 10 into 8 plus 5 into 7 minus y1 equals to 0. So my portion would be 12. Okay, I'm not putting equal to here or writing equal to here. I will write at the end. Okay, 12 minus 50 plus 10 by 4 minus 80 plus 35 minus y1 equals to 0. So my value would be minus 38 plus 10 by 4 minus y1 equals to 0. So 10 by 4 minus y1 equals to 83. Now I have one equation, this one, and the another is this one. If you can think about these two, we have positive y1, we have negative y1. So we can directly differentiate them. I mean directly calculate them, right? Or simultaneously.
So let me start with these two, right? So I'm writing the equation here. Minus y4 with this one plus y1 equals to minus 3. So I'm computing them. Plus minus sign cancel. That is 9y4 equals to 80. Okay, I hope you understood this thing. So my y4 equals to 80 upon 9. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे माइट बी योर आंसर विल बी 9 8 राइट 8.888 और यू कैन ऑल्सो राइट 8.89. दिस वुड बी योर फर्स्ट पार्ट, right? So as I got the value of y4, so I'm putting this value in the next part. So y4 equals to 8.89. So I'm putting this value in this equation, right? So y4 plus y1 equals to minus 3. So I'm putting here 8.89 plus y1 equals to minus 3. So y1 equals to minus 3 minus 8.89. So the answer would be 8. ये minus 3 था ना? Just give me 1 sec. I think in the formula this would be minus y, right? Minus 4y. Minus y4, right? There was minus. So when we will shift it here, that would be plus. So this would be 5.89. So this would be my second answer. Okay. As they were asking about the weight of the baby, so you can also write LBS, right? I hope this point is clear to you. That was our 2018 question. Okay. So the next question is 2012 April. That is one of the important question. बेटा इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना. Might be इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा. इसमें आपको डिटरमाइन करना है परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स अंडर 35 years of age. Data is given, so I'm writing the data. Don't worry. Under 25 years, under 30 years. This is related to criminal data, I think so, right? So under 40 years and under 50 years. And the values which are given to you, this is your x. Values given to you is 52, 67.3, 84.1 and 94.4. Okay, so now let's start. That is x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3. निकालना क्या बोला उसने? 35 से अंडर वाले निकालने, यानी अंडर 35 हमें निकालना है. सो दिस इज माई x4. एंड आपको पता ही होता है जिसका हमें दिया नहीं होता उससे हम yx लेते हैं. ठीक है. अच्छा, पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है? देखो, आपकी इच्छा है. कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने अभी पीछे किया, तो उस वाले में आप न्यूटन बाइनोमियल भी लगा सकते हो, बिकॉज इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में दोनों में से कुछ भी लग सकता है. बट इफ 2 ब्लैंक दिए हैं देन इट वुड बी बेटर यू शुड गो फॉर बाइनोमियल, राइट? इंटरपोलेशन क्योंकि उसमें पॉसिबल हो जाता है. इंटरपोलेशन में 2 ब्लैंक है तो ईजिली निकल जाते हैं 2 फॉर्मूले लगा के. बट इफ़ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अंडर वाला आ गया, इसमें सारा डेटा गिवन है, 35 से ओवर पूछा है. और एक रिमेंबर हमने बिटवीन वाला क्वेश्चन किया था, 2 वैल्यूज़ के बिटवीन निकालना है. तो बिटवीन वाले में ना हमेशा ट्राई किया करो कि डेटा ना, जैसे बिटवीन निकालना है तो लेस देन 40, बिटवीन 40 निकालना है तो लेस देन 40 लेंगे ना. सो लेस देन 40 जो डेटा है उसको लेस देन में कन्वर्ट कर लो पहले. अगर आपने डेटा लेस देन में कन्वर्ट कर लिया, देन उसके बाद आपने 40 को लेके लेस देन का पार्ट निकाल लिया, उसमें से 30 का माइनस कर दो. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड मैंने जो बोला. अभी जो हमने लास्ट किए ना 2 क्वेश्चंस लैंग्वेज के, उनमें हमने यही किया है, हमने पीछे वाला डेटा माइनस किया निकाल के. एंड दैट वुड बी द ईजीएस्ट वन. इतना डिफिकल्ट नहीं है लैंग्वेज का फॉर्मूला, बट आपको मतलब पॉइंट्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. एंड सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने हमें 35 से लेस देन पूछा है, अंडर 35. तो अगर वो बिटवीन भी पूछता तब भी मैं सेम करती, बिटवीन 30 एंड 35. तो मैं 35 का आंसर निकालती, फिर 30 का ये आंसर है मेरा, ये माइनस कर देती, देन आई गेट माई आंसर. ओके. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लैंग्वेज. मैं अगेन डायरेक्ट करूँगी बेटा. ठीक है. 35 का निकालना मुझे, y35. तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन वैल्यू पुट कर रही हूँ. आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. 52, 35 माइनस 30, 35 माइनस 40, 35 माइनस 50 होल डिवाइड बाय, पहला हमारा 25 माइनस 30, 25 माइनस 40, 25 माइनस 50. सो लेट मी कंप्लीट, आई विल कम बैक. सो आई डिड दिस पार्ट. ये हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन. सो यू कैन चेक आउट दिस वन. आई हैव डन द क्वेश्चन. सो दिस इज माई आंसर. और परसेंटेज में होगा तो बेटा इंटू
वो कर लेना, सीधा परसेंटेज लगा लेना, बिकॉज ये डेटा तो डायरेक्ट ही परसेंटेज में निकलता है. सो परसेंटेज में बोलोगे इसको तो 77.4% इज योर आंसर. ओके, so let me think about the next question which we need to do, that is 2009 September. Okay, now I have written the question, that is 2009 September, one of the good questions. Let me start doing this question. y naught, y1, y2, y3, 25 के लिए मेरे को सॉल्व करना है. सो मैं यहाँ नहीं लिखूँगी, मैं न्यूटन मेथड यूज़ कर रही हूँ. सो डेल्टा 1 बिकॉज 3 तक जा रहा है, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. सो हाउ आई विल सॉल्व दिस, deduct these two values, 0.00154. The next one is, sorry, this one arrow first, 0.00191, 0.0022. So this is my delta 10, delta 11, delta 12. Okay, the next one is these two, 0.00037, this one 0.00029. कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है, that's it. 0212 and the last one इनका minus 0.00008. I think so 4 zeros आनी चाहिए, right? दो yes, delta 03. Okay, let me calculate the value of x. X equals to 25 minus 20 and जो अपर दो करते हैं हम उनको माइनस, राइट? 24 minus 20, एक 25 minus 20 हो गया, एक 24 minus 20 हो गया. So what would be my answer? 5/4. So my answer is 1.25. Now applying the formula, yx equals to, I'm not writing the formula, I'm directly putting the values. ठीक है, 0.01427 plus 1.25 into 0.00154 plus 1.25 into 1.25 minus 1 into, सॉरी अपॉन 2 कर लेते हैं पहले, इंटू 0.00037. रिमेंबर बेटा वैल्यूज ठीक लिखना पेपर में, दैट इज 37. ओके, वैल्यू में मिस्टेक नहीं होना चाहिए. प्लस 1.25, 1.25 माइनस 1, 1.25 माइनस 2 एंड माइनस 0.00008 होल डिवाइड बाय 3 into 2 into 1. So what would be my answer? 0.01427 plus 0.00195 plus 0.00058 plus 0.00003. Let me calculate. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, it's complete. What is my answer? 0.016256. So this is my answer. Okay, I hope you understood this question. This was 2009 September. Okay, now let's come to the next part. So now we are starting with 2009 April question. This would be our second last question. After that, I think only one single question is remaining. So we will do that. Okay, so this value is given to us. So let me draw the portion. Actually in question they were asking about falling in the earning group of itna. Okay, they are asking about 25 to 35, right? इस ग्रुप के बीच की बात कर रहा है वो, तो न्यूटन कर लेते हैं अप्लाई. चॉइसेस योर्स, राइट? लैग्रेंज भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, दोनों. बट क्योंकि ना मेरे पास दोनों में से किसी की भी वैल्यूज गिवन नहीं है, 25 की भी वैल्यू गिवन नहीं है एंड 35 की भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो दोनों की निकालनी पड़ेगी. एक्चुअली मैं लैग्रेंज तब लगाती हूँ मोस्टली जब मेरे को एक की वैल्यू निकालनी है और पहले वाले की ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. वो डेटा बनता है ना CF वाला कॉलम जिसमें ऐड करते जाते हैं हम, वो वाले कॉलम में हमें ये चीज़ पहले से दी होती है. जैसे 30 to 40 में हमने 40 का निकाला था पर 30 का ऑलरेडी गिवन था, तो इसमें तो दोनों का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा लैंग्वेज, क्योंकि पहले 35 से करना पड़ेगा, फिर 25 से करना पड़ेगा, फिर दोनों के आंसर माइनस होंगे. इट वुड बी बेटर गो फॉर न्यूटन हियर. ओके, लेट मी स्टार्ट. सो दैट इज y0, y1, y2, y3, y4, y5. ओके, देन बिकॉज y5 तक जा रहा है तो डेल्टा के कॉलम बनेंगे हमारे 4, 5 तक, 2, 3, 4 एंड 5. चलिए डिफरेंस निकालते हैं. दिस और दिस में डिफरेंस, दैट इज 100 डेल्टा 01, देन अगेन 150 डेल्टा 11, देन अगेन 200, अगेन 100, अगेन 100. ओके, सो दैट इज डेल्टा 12, डेल्टा 13, डेल्टा 14. Okay, now coming to the next part, this is 50,
This one is again 50. This one is again 100 minus 200. Just give me 1 sec. इसमें से माइनस किया और 200 में से 200 लेस किया, दैन इट वुड बी 100. यहाँ पे हमारा ये बनेगा ना 100 माइनस 200. सो दैट इज 100 माइनस 200 माइनस 100, राइट. सो यहाँ पे 100 माइनस 100 0. ओके, 100 minus 200, that is minus 100, 100, yeah, that's correct. So 2 0, delta 2 1, delta 2 2, delta 2 3. Okay, the next one, this minus this, that is 0. This minus this, अब ये 100 माइनस करना है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम. Let me take another sheet. Yeah, this one. So I'm calculating here. Minus 100 minus 50, right? Minus 100 minus 50. 50 minus 50 आपका 0 हो गया. Minus 100 minus 50, that would be minus 150, right? Minus 150. अब इन दोनों का करेंगे. So 0 minus minus 100. ओके, तो आई थिंक सो 100 आना चाहिए इसका, राइट. एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेना बेटा, कहीं क्लैरिकल कोई मिस्टेक ना हो. बिकॉज बट हमें तो ऊपर वाला ही चाहिए, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ना. 150 minus this 200 minus 150 50, 100 minus 200 100. ओके 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 ओके, सॉरी यहाँ पे ना 200 आ रहा था, राइट. तो मैंने 100 कंसीडर कर लिया ना. 200 था, 500 700 का डिफरेंस, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, राइट. एंड यहाँ पे आपका 100 माइनस यहाँ पे आपका 100 आएगा. ओके, प्लीज़ करेक्ट दिस. वो एक्चुअली यहाँ पे मैंने ना 600 कंसीडर करके कर दिया था. सो इस वाले कॉलम में हमारा ऊपर वाला पोर्शन तो 0 ही आएगा. नेक्स्ट वाला हमारा 0 माइनस 50, दैट वुड बी माइनस 50, राइट, माइनस 50. और यहाँ पे 100 माइनस 0, माइनस 100 माइनस 0, सो दैट इज अगेन माइनस 100. सो यहाँ पे 3 वैल्यूज आई हैं मेरी, 0 माइनस 50 माइनस 100. सो दिस इज माई डेल्टा 03, डेल्टा 04, डेल्टा 05. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट. ओके, सॉरी 3 1 ऑपरेशन कर दिया मैंने, 3 2. ओके, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू. सो लेट वी डू द second last portion basically. So minus 50 minus 0, this is minus 50 again, and minus 100 minus 50. So let me do that. Minus 100 minus minus 50, so minus minus plus, minus 100 plus 50, that is minus 50. Okay, so minus 50. So this is delta 04, this is delta 1 4, right. And the last one, minus 50 minus minus 50, that is plus, so that is 0, delta 0 to 5. I hope you understood till that extent, right. प्लीज़ बी श्योर, जहाँ पे भी गड़बड़ लगे रिपीट करके देख लेना, बिकॉज एग्जाम में पता नहीं होता ना. आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो आपको पता चले कि कहाँ मिस्टेक हुई है. आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, ओके, आई एम जस्ट डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यूज हियर. So let we start. First of all, we have to put 25 on the place of x, and then we have to put 35 on the place of x, right? So for x equals to 25, I'm doing it right now. So x equals to 25 minus 10 upon 20 minus 10. So my value would be 15 upon 10, that is 1.5. So now I'm calculating y25 equals to 50 plus 1.5 into 100. Plus 1.5 minus 1 upon 2 into 1 into 50 plus 1.5 minus 1, 1.5 minus 2 upon, that is 3 into 2 into 1 into 0 plus 1.5 minus 1, 1.5 minus 2, 1.5 minus 3, right, upon 4 into 3 into 2 into 1 into what is my value, that is minus 50. And the last portion, that is 1.5, 1.5 minus 1, 1.5 minus 2, 1.5 minus 3, 1.5 minus 4 into what is the value here, that is 0, I think so, right. So whole divide by 5 into 4 into 3 into 2 into 1. बेटा 0 बेशक बन रहा हूँ आंसर, आपको लिख के तो दिखाना पड़ेगा ना पेपर में, एग्जामिनर को सपने थोड़ी आ रहे हैं, नहीं. 50 plus 150 plus 18.75 plus 0 minus 1.172 plus 0. So my value would be 217.578. You can also say 218, okay.
that is equivalent to 218. Okay, now coming for x equals to 35, दोनों का डेटा निकलेगा ना, so x की वैल्यू चेंज होगी अब आपकी 35 माइनस 10, बस ऊपर वाले में ना सेम टू सेम लेना, 25 की प्लेस पे 35 पुट कर देना. ओके, that would be 25 upon 10, that would be 2.5. Now what you have to do, you have to replace all the values 1.5 with 2.5. I'm doing it. So y35 equals to 50 plus 2.5 into 100 plus 2.5 minus 1 into 50 whole divided by 2 plus 2.5 minus 1 into 2.5 minus 2 whole divided by 3 into 2 into 1 into 0 plus 2.5 minus 1, 2.5 minus 2, 2.5 minus 3 into minus 50 whole divided by कितना था, 4 फैक्टोरियल था ना, 4 into 3 into 2 into 1 plus the last portion 2.5 minus 1, 2.5 minus 2, 2.5 minus 3 into 2.5 minus 4 into 0 whole divided by 5 into 3 into 2 into 1. So I'm writing in a very small handwriting. Please try to understand this portion. So the first portion answer is 50. The second one is 250 plus 93.75 plus 0 plus 1.953 plus 0. So my value would be 395.703. That's equivalent to 396. So now you understood 396 यहाँ पे आया हमारा, और पीछे कितना आया था 218. ये 35 का, ये 25 का. 35 के आंसर में से 25 का आंसर माइनस कर दीजिए, you will get your answer. So 396 minus 218, that is 178. So that is my answer. I'm writing here 396 minus 218, that is 178. So this is my answer. ये between का आंसर आ गया बेटा. ये लेस देन इतना था 35, ये लेस देन 25 था, दोनों को माइनस किया, we got 175. Understood or not? And the last question which we are doing, that is 2006 April. Marks 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Okay, and the another column is number of students. Please write down by your own. Okay, I'm writing in short. 31, 42, 51, 35, 31. अब उन्होंने ना मेरे को बिटवीन पूछा है एंड लेस देन पूछा है, दो वैल्यूज पूछी है, लेस देन 45 एंड बिटवीन 40 एंड 45. तो कॉमन सेंस लगाओ आप, 40 का बिटवीन तो यही, 40 से लेस देन तो यही होगा, है ना, और 45 का हमें निकालना पड़ेगा, देन उन दोनों को माइनस कर लेंगे. तो यहाँ पे आप लैग्रेंज भी अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे न्यूटन भी अप्लाई कर सकते हो. राइट नाउ बिकॉज मैंने लास्ट क्वेश्चन न्यूटन का किया था तो मैं अभी न्यूटन ही कर रही हूँ. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. y0, y1, y2, y3, y4. राइट, सो बिकॉज 4 तक गया तो 4 के कॉलम बनेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4. सो इन दोनों को माइनस करेंगे. व्हाट वुड बी माय वैल्यू? दोनों को माइनस करो फटाफट से. ओके, लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले, तो इसको लेट वी कन्वर्ट इनटू लेस देन. तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली यहीं पे लेस देन कर देती हूँ. ओके, लेस देन यहाँ पे कॉलम बना देते हैं हम एक, लेस देन. ओके, बिकॉज लेस देन कन्वर्ट करेंगे तभी तो 45 की वैल्यू आएगी. लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80. एंड इसका CF बनाना पड़ेगा नंबर्स का. राइट, सो CF बनेगा इसका 31, 73, 124. ओके, 135 और ये ऐड किया तो 159. आई एम करेक्टिंग दीज वैल्यूज बिकॉज आई एम कन्वर्टिंग दैम इनटू CF. ओके, ऐड कर लेते हैं सबको, वेरी सिंपल. 190 इज द लास्ट. राइट, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन पहले किया है. चेक कर लेना एक बार वीडियो में, कहीं पहले यही क्वेश्चन सेम ना किया हो. माइट भी समझाते हुए जब वो मेथड समझा रहे थे न्यूटन का तब किया हो. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. तो इनका डिफरेंस 42, द नेक्स्ट 124 था ये. इनका डिफरेंस आया हमारा 51. गिव मी 1 sec. Let's make it fast. 51, then 35, then 31. वही आएगा ना जो आपका F था, वही वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे. सो दिस इज माय डेल्टा 10, डेल्टा
1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3, राइट। नेक्स्ट 2 का करते हैं 9 minus 16, next minus 4. So that is my delta 0 2, delta 0 कितना बनेगा हमारा 1 2 ना 1 2 एंड डेल्टा 2 2. देन नेक्स्ट का करेंगे तो हमारा आएगा -25, इन दोनों का करेंगे 12 पॉजिटिव का, राइट। सो दैट इज माई डेल्टा 0 3, दैट इज माई डेल्टा 1 3 एंड द लास्ट वन इज 37 डेल्टा 0 4. ओके, so let me complete it fast. So x equals to, because मेरे को 45 का कैलकुलेट करना है तो 45 minus 40 upon 50 minus 40, so this would be 5 upon 10, so the answer is 0.5. Look बेटा, I am directly putting the value, right? 45 का निकाल रही हूँ मैं, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करूँगी, फॉर्मूला नहीं डिक्टेट करेंगे हम अभी, ठीक है। so I am putting the values 31 plus 0.5 into 42 plus 0.5 into 0.5 minus 1 into 9 whole divide by 2 plus 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.5 minus 2 into minus 25 whole divide by 3 into 2 into 1 plus, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में 0.5 0.5 minus 1 0.5 minus 2 0.5 minus 3 into 37 whole divide by 4 into 3 into 2 into 1, right। 31 plus 21 minus 1.125 minus 1.5625 minus 1.4453. So the answer is approx 47.8 or you can say 48, right। अब 48 तो 45 वाला आ गया, आप पूरा गाथा में लिखेंगे बेटा इसको, 48 तो 45 वाला आ गया, उसने बोला था 40 और 45 के बीच का, तो 40 का तो ऑलरेडी हमारा कितना है 31, आई होप यू अंडरस्टूड। 45 का हमारा कितना आया 48, दिस वन, एंड 40 का ऑलरेडी हमें कितना गिवन है 31, सो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे एंड 48 minus 31 दैट इज इक्वल्स टू 17, सो दिस इज माई आंसर। ये लास्ट वाला आप गाथा में लिख देना, ठीक है, ये थोड़ा ना इंग्लिश बना के तब लिखना आपने, ओके। सो वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चंस, ऑल DPT questions, and that's it from my side, and I hope you enjoyed watching all the videos, right? So I hope these videos will benefit you. And for theory regarding, it would not be possible for me to make more videos for theory, okay, because of my busy schedule. Anyways, thank you so much for watching these videos and I hope all these will benefit you. Okay, bye bye, take care and have a good luck.